Athagad came to a standstill on Wednesday as residents observed a 12-hour bandh demanding district status for the region. The shutdown called by the Athagad Zilla Kriyanushtana Committee was enforced from early morning till evening, bringing daily activities to a halt. Protesters gathered at the Athagad Chandbali Chak on State Highway 65, staging demonstrations to press their long-pending demand. Shops and markets remained closed, traffic movement was suspended, and public life was visibly disrupted. Several local organizations extended support, reflecting widespread public backing for the cause. Committee members said the demand for district recognition has already been placed before the state government through the district collector. While the administration assured that essential services would continue, protesters claimed near total participation across the town. Organizers noted that Athagad has been seeking district status for decades, citing administrative needs and population strength in the subdivision. They warned that the agitation would continue if authorities fail to act, expressing hope that the shutdown would push the government to take a decisive step. आठगड़ जिला क्रियानुष्ठान कमिटी तरफ आज 12 घंटिया आठगड़ बंद आह्वान दिया जहाँ सकाल 10टा सुधा जहाँ देखा मिलूँ पूरा संपूर्ण सफल होती आठगड़ बंद कारण ये आठगड़ जिला दाबी आज नुहे दीर्घ 1992 मसीहा ठारू ये दाबी है आसी केवल राजनैतिक लोक मान व्यक्ति मान इच्छा शक्तिर अभाव जो आज आठगड़ जिला हबार वंचित होती तेणु पुनर्बार आम राजनैतिक व्यक्ति मान अनुरोध करुचु जदि आपणकर सत्साहस अच्छी आठगड़ जिला क्रियानुष्ठान कमिटी सहित आप सामिल हूँ नेतृत्व आपण मैंने भी नियंतु कारण ये माटी लड़े ये पार्टी लड़े नुह ये माटी आठगड़ माटी लड़े आठगड़ जिला न हवा पर्यंत ये आंदोलन चालू रोटे कथा आपको सूचय देवाक चाहे आठगड़ सब डिविजन जनसंख्या 6 लाख ऊर्ध्व आठगड़ सब डिविजन रही 4टा तहसिल रही 4टा ब्लॉक रही 3टा एनईसी रही